السلام علیکم گرلز، ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اینڈ یو ہیو بین تھرو پریویس لیکچر. وی ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ یور نیکسٹ چیپٹر دیٹ از اوور کوٹ. And so far we have discussed that there was a young boy. He was roaming around on the Mall Road and he was moving across the Charing Cross and the other points. And he seems to be relishing his evening promenade. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اپنی دوپہر کے وقت کی جو واک تھی اس کو بہت زیادہ انجوائے کر رہا تھا. اینڈ اٹ سیمز دیٹ ہی از امیون ٹو دا کولڈ آئسی گسٹز. اور دین ہی واز all the tanga walas and rickshaw walas when they saw him, they start moving toward him and they started to they want to they want کہ اگر اس کو کچھ ٹیکسی یا اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ان کو رابطہ کرے اور ان کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ سفر کر سکے. اور اسی اسنا میں ایک ٹیکسی والا جو ہے وہ بھی اس کے پاس آتا ہے اور وہ اس کو بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ٹیکسی والے کو اپنے ہاتھ سے جھٹک کر پیچھے بھیج دیتا ہے. Then he was sitting on a bench and he saw a cat that was already shivering, and and in order to pacify that cat he just put her in his lap. اور اس کو وہ اس کے جو فر ہے اس کے اندر انگلی چلاتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے اور اس کو تھوڑا سا پیسیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. دین ہی اسٹارٹڈ موونگ ٹوورڈ. دین دیر واز اے ہوٹل جہاں پر ایک فورن میوزک پلے ہو رہا ہوتا ہے. سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اس کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے جمع ہوئے ہوتے ہیں. The young man also stood and listened for a moment or so, then walked on. نوجوان لڑکا بھی وہاں پر کچھ وقت کے لیے کھڑا ہوا، اس نے کچھ سنا اور پھر وہاں سے چل دیا. A few minutes later he found himself outside a large western music shop. Without hesitation he went in. کچھ وقت کے بعد اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک بڑی مغربی طرز کے جو موسیقی کی دکان تھی اس میں پہنچا اور اس نے بغیر کھسکچاہٹ کے اس کے اندر داخل ہو گیا. There was musical instrument different of kinds arranged on shelves around the wall. وہاں پر مختلف اقسام کے میوزک کی جو تھیں وہ چیزیں تھیں اور وہ شیلف پر بہت آرام سے آرگنائز تھی. On a large table of different kind arranged on shelf around the مختلف موسیقی کے جو اوزار تھے یا انسٹرومنٹ جیسا کہ گٹار ہے، ہارمونیم ہے اینڈ وی کین سے پیانوز اینڈ آل، وہ ڈفرینٹ شیلف سے بہت زبردست طریقے سے ارینج ہوئے تھے. On a large table attractively displayed were the latest hit song. اور ایک بڑے سے ٹیبل پر بہت شاندار طریقے سے جو اس وقت کے گانوں کی لیٹسٹ ہٹس تھیں وہ اس پر لگی ہوئی تھیں. A Spanish guitar was hanging on the wall. اور ایک اسپینش گٹار دیوار پر لٹکا ہوا تھا. Explain it with the air of control کے ورڈ کو انڈرلائن کریں. اس نے جو ہے وہ confidence with an air of confidence اس نے یہ جو ہے اس کے پاس گیا اور اس کو دیکھنا شروع کیا. And study the price label attached on it. اور اس کے اوپر جو قیمت کے لیبل لگے ہوئے تھے وہ بھی اس نے پڑھا. Then a huge German piano diverted his attention. پھر ایک بڑے جرمن پیانو کی طرف اس کی توجہ مرکوز ہو گئی. Lifting the cover of the keyboard, he played a few notes and closed it again. اس نے اس کی کچھ نوٹس کو پڑھا، کھولا، ان کو بجایا اور اس نے اس کو دوبارہ بند کر دیا. One of the salesmen came up. ایک سیلز مین اس کے پاس آیا. Good evening sir, he asked. Can I help you? ایک اس نے کہا کہ سر کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ No thank you, the young man said with an air of indifference. اس نے ایک air of indifference کے ساتھ اسے کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں. Then suddenly as if remembering something he went out. پھر اچانک جس سے اسے کچھ یاد آیا اور وہ وہاں سے دکان سے باہر نکل گیا. Oh yes. Could you let me have a list of this month's gramophone record? کیا تم مجھے اس مہینے کے جو گراموفون کے ریکارڈز ہیں وہ دے سکتے ہو؟ He slipped the list into one of his pocket of his overcoat and resumed his promenade on the mall. اس نے وہ لسٹ اپنے جو ہے وہ جیب کے اندر ڈالی اور اپنے شام کی جو واک تھی اس کو مال روڈ کی طرف جاری رکھا. He stopped next at a book stall. ایک کتابوں کی دکان کے پاس وہ رکا. He picked up one of the or two magazines and after a hurried glance at the content carefully replaced them. اس نے کتاب کے جو ٹیبل آف کانٹینٹ تھا مرکزی صفحہ تھا اس کے اوپر ایک نظر دوڑائی اور وہاں سے اس کو واپس رکھ دیا. A few yards further on اور کچھ ہی کلومیٹر دور a large Persian carpet which was hanging outside a shop attracted his attention. پھر کچھ ہی آگے تک چل کر ایک بہت بڑا فارسی جو پرشین کارپیٹ تھا اس کے اوپر اس کی جو توجہ تھی وہ مرکوز ہو گئی.
The owner of the shop, wearing a large robe and a silk turban, greeted him warmly. दुकान का जो मालिक था, जिसने एक बहुत रोब, एक चोगा सा पहना हुआ था और उसने अपने सर पर एक टर्बन पहनी हुई थी, उसने उसको बहुत गर्म जोशी के साथ खुश आमदीद कहा. आई जस्ट वॉन्टेड टू सी दिस कारपेट, द यंग मैन सेड विद टू द कारपेट डीलर. मैं सिर्फ ये कारपेट देखना चाहता हूँ, नौजवान आदमी ने उससे कहा. विथ प्लेजर सर, खुशी के साथ. ओ डोंट बॉदर टू टेक इट डाउन, उसको नीचे लाने की कोशिश ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है. आई कैन सी इट क्वाइट वेल एज इट इज़. हाउ मच इज़ दैट? उसने कहा, मुझे वो बहुत वहाँ से बखूबी अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है, इसकी कीमत क्या है? 1432 रुपीज़ सर, इसकी कीमत है 14,000 और 32 रुपये सर. द यंग मैन फ्रॉन्ड एज इफ़ टू सजेस्ट ओह सो मच. उसने अपनी आंख का जाविया ऐसा बनाया जैसे वो कहना चाह रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है. यू हैव ओनली टू सेलेक्ट सर, सेड द कारपेट डीलर एमेबली, बहुत जैसे आप कहते हैं कि खुशी के साथ, एतमाद के साथ, जैसे आप बातचीत को बढ़ाना चाहते हैं. या ऑन अ फ्रेंडली नोट, उसने कहा, सर आपको सिर्फ पसंद करने की ज़रूरत है, हम इसकी कीमत को कुछ मुनासिब कर देंगे. एंड वी विल रिड्यूस द प्राइस टू द मिनिमम, पर मैं इसकी कीमत को बिल्कुल नीचे ले आऊँगा. थैंक यू सो मच, द यंग मैन सेड अप्रूविंगली. बहुत शुक्रिया, नौजवान आदमी ने खुशी के साथ अप्रूव करते हुए कहा. अ फाइन कारपेट इंडीड, एक बहुत शानदार कारपेट है. आई विल कम अगेन सम टाइम, मैं दोबारा कभी यहाँ पर आकर चक्कर लगाऊंगा. एंड ही वॉकड अवे, और वो वहाँ से चला गया. द क्रीम कलर रोज विच अडॉर्न द लेबल ऑफ हिज ओवरकोट हैड स्लिप्ड एंड वॉज अबाउट टू फॉल. जो उसने फूल लगाया हुआ था, जो उसके कोट के लेबल के पास था, वो अचानक से स्लिप होना और वो गिरने ही वाला था. ही एडजस्टेड इट विद अ पिक्यूलर स्माइल ऑफ सेटिस्फेक्शन. उसने एक खुशी और एतमाद की मुस्कुराहट के साथ उसको सेट किया. ही वॉज नाउ वॉकिंग अलॉन्ग द पेवमेंट नियर द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट, जो लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, उसके पास जो फुटपाथ था, वो वहाँ पर वॉक कर रहा था. ही हैड बीन रोमिंग अबाउट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. वो काफ़ी वक्त से घूम रहा था. बट स्पिरिट्स वर स्टिल हाई, लेकिन उसकी जो स्पिरिट्स थी, उसका जो जोश और वलवला था, वो भी काफ़ी हाई था. अभी भी वो अपनी फुल एनर्जी में था. ही वॉज नाइदर टायर्ड नॉर बोर्ड, ना वो थका था ना ही वो अभी उकताया था. एज this part of the mall, the crowd of pedestrians has thinned down and there were quite long stretches of empty pavement between one group and another. माल का ये हिस्सा, जो कि हर वक्त पैदल चलने वाले पेडिस्ट्रियंस बेटे होते, पैदल चलने वालों से भरा रहता था, हैड थिन डाउन, अब उसमें कुछ कमी हो गई थी. थिन होता पतला हो जाना, यानी कि लंबी लंबी मोटे मोटे की तारें थी होती थी. दिन में वहाँ पर बहुत से लोग चलते थे, लेकिन शाम के वक्त वहाँ पर चलने वालों की तादाद कम हो चुकी थी. एंड देयर वर क्वाइट लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ एंटी पेवमेंट बिटवीन वन ग्रुप एंड द अदर. और एक अब पैदल चलने वाले लोगों के ग्रोह के दरमियान और दूसरे ग्रोह के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा वक्फा भी नज़र आ रहा था. The young man, as he went along, tried to spin his can around one finger, but in his attempt he dropped it. अब नौजवान आदमी, जो कि पहले से अपने हाथ की कैन को घुमा रहा था, उसने दोबारा उसको घुमाने की कोशिश की और इसी असना में उससे गिर गया. ओ सॉरी, ही एक्सक्लेम एंड बेंडिंग डाउन एंड पिक्ड अप. उसी दरमियान में वो उससे गिरा, उसने कहा ओ सॉरी, उसने एक्सक्लेम, स्ट्रॉन्ग इमोशन दिया और उसने झुककर उसको पकड़ने की कोशिश की. Meanwhile, a young couple who had been walking behind him passed by and moved ahead of him. इसी असना में एक नौजवान जोड़ा, जो पहले उसके पीछे चल रहा था, वो उनसे आगे निकल गया. The youth was tall and was wearing black corduroy trousers and a leather jacket with a zip. जो लड़का था वो एक नौजवान था और उसने corduroy की पैंट पहनी हुई थी, ब्लैक ट्राउजर्स, कॉटन ट्राउजर्स नुमा ट्राउजर्स पहने हुए थे और जीन की जैकेट थी जो जिप से बंद थी. द गर्ल वोर अ फ्लॉपी शलवार ऑफ वाइट सेटन एंड अ ग्रीन कोट. और लड़की ने एक फ्लॉपी फूली हुई सी शलवार पहनी थी सफ़ेद साटन की, एंड ग्रीन कोट और ग्रीन ओवर कोट पहना था. शी वॉज शॉर्ट एंड बल्कि, उसकी जो वो थोड़ी छोटे कद की थी और थोड़ी सी मोटी थी. द यंग मैन वॉज डिलाइटेड टू वॉच दिस स्पेक्टिकल मंजर देखकर वो बहुत उसको बहुत दिलकश लगा. एंड केप्ट ऑन वॉकिंग बिहाइंड देम, वो उसके पीछे पीछे चल रहा था. सो फार द यंग मैन हैड फाउंड लिटिल टू इंटरेस्ट हिम अमंग द पर्सन्स ही हैड ऑब्जर्व दैट इवनिंग. अभी तक उनको जितने भी दोपहर से उसने लोग देखे थे, उनमें कुछ ख़ास दिलचस्पी ना नज़र आई थी. He had been perhaps too deeply engrossed in himself. वो शायद तब तक अपने ही आप में बहुत बुरे तरीके से खुबा हुआ था या डूबा हुआ था.
He followed them closely, hoping to get a glimpse of their faces and to hear more of their talk. उसने उनके करीब जाने की कोशिश की ताकि वो उनके चेहरों पर एक नज़र डाल सके, एक झलक डाल सके और या उनको करीब से उनकी बातें सुन सके. But now they have reached the big crossroad near the General Post Office. लेकिन अब तक वो उससे बहुत आगे निकल चुके थे और जो जनरल पोस्ट ऑफिस था उसके करीब की जो बिल्डिंग थी उसके पास पहुंच चुके थे. The pair stopped for a moment. एक लम्हे के लिए वो जोड़ा रुक गया. Then after crossing the mall, headed toward McLeod Road. और कुछ समय वक्त गुजरने के बाद वो McLeod Road की तरफ चल दिए. When the couple had walked some 100 yards ahead of him. अब वो नौजवान जोड़ा तकरीबन उससे 100 गज की दूरी पर था. He hurried, moved after them. वो तेज़ी से उनके पीछे भागा. Hardly has reached halfway across the road when a truck full of brick came from behind like a gust of wind and crushing him down, speed off toward McLeod Road. अभी उसने आधा ही सफ़र तय किया था कि एक ईंटों से भरा हुआ भारी भरकम ट्रक उसके पीछे हवा के एक झोंके की तरह आया और उसको कुचलता हुआ McLeod Road की तरफ निकल गया. The driver of the truck had heard a shriek and had actually for a moment slowed down. उसने एक चीख की आवाज़ सुनी और एक लम्हे के लिए वो थोड़ा रुका भी. But realizing that something serious has happened, had taken advantage of the darkness and stepped away into the night. और उसको लगा कि कुछ गंभीर हो गया और उसने अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए और जब उसे लगा कि कुछ उससे सख्त गलती हो गई उसने अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से ट्रक तेज़ी से गुजार कर ले गया. 2 or 3 passerby who had witnessed the accident shouted, "Stop him, take the number." 2 और 3 लोग जो सफ़र पर मुसाफिर वहाँ से गुजर रहे थे जिन्होंने ये सारा वाक़या देखा उन्होंने आवाज़ लगाई कि इसको रोको और इसकी ट्रक का नंबर लो. But the truck was no more to be seen. लेकिन अब ट्रक कहीं भी दिख नहीं रहा था. In a short while, quite a large crowd had collected. कुछ ही लम्हे में एक बहुत बड़ा हजूम जमा हो गया. A traffic inspector on his motorbike stopped. एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपनी मोटरसाइकिल पर वहाँ पर करीब आकर रुका. The young man was badly hurt. नौजवान आदमी बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था. There was a lot of blood about and he was not in a very precocious stage. उसका बहुत खून निकल चुका था और उसकी हालत अब बहुत नाजुक थी. A car was stopped and he had loaded onto it and was taken to a nearby hospital. एक गाड़ी को रोका गया उसमें उसको डाला गया और करीब के हॉस्पिटल में ले जाया गया. When they reached there, he was just alive. जब वो वहाँ पहुँचा तो वो कुछ अभी ज़िंदा था और उसकी हालत कुछ ज़िंदा मौजूद उसमें ज़िंदगी की सांसें मौजूद थी. With this, girls, we will stop here. Inshallah, we try to do your next lecture inshallah your next class. Till then, stay tuned and try to go through your lesson. If you have any queries, if you have any problem, try to ask your teacher. If you want to ask me any question, you can personally text me. And if still you face any issue, then you can later on listen it once again, so it will be far more clear for you people. With this, I would like to say Allah Hafiz, and we will try to do the rest of the chapter in your next class. Till then, Allah Hafiz, stay tuned.